Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching Ahlabad High School and Junior College YouTube channel. We are just starting our class 7th Mathematics and chapter number 3 Simple Equations, and in that we will going to learn exercise number 1. But before starting this, what is simple equation? Simple is nothing but सादा नॉर्मल. इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन इज नथिंग बट एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होना चाहिए जिसके दो साइड्स होना चाहिए और वो दोनों साइड्स भी इक्वल होने चाहिए. ठीक है, उसको हम यानी कि सिंपल इक्वेशन कहते हैं. इसको समझने के लिए हम थोड़े से प्रॉब्लम्स कर लेंगे. एक्सरसाइज नंबर 1. एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको बताया जा रहा है कि राइट LHS एंड RHS. ओके, आपको LHS और RHS लिखो बोल रहा ऑफ द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन, लाइक ऑफ द फॉलोइंग simple equations. So we have question number 1 with us like 2x is equals to 10. So here I will tell you what is equation. Equation is nothing but having two sides and the sides is LHS and RHS. What is LHS? What is RHS? LHS means left hand side. RHS means right hand side. So here we have to solve. Okay, on solve जैसा अभी हमेशा के लिए मैं जो स्टेटमेंट लिखता हूँ given 2x is equals to 10. So here LHS is 2x whereas RHS is 10. Next we have with us like question number 2. What is question number 2 with us? Like 2x minus 3 is equals to 9. So how we can write this? Just we need to write solve. After writing the solve, given what it is given all the student and viewers, 2x minus 3 is equals to 9. Here what is LHS? LHS is nothing but 2x minus 3 whereas RHS here is 9. होप यू अंडरस्टूड. उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा. सिर्फ आपको इक्वेशन में LHS क्या है RHS क्या है बताना है. इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो LHS कहलाएगा और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड पे है वो RHS कहलाएगा. तो थर्ड वाला भी हम थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा नहीं पूरा देख लेंगे कंप्लीट. वी विल सी थर्ड वन ऑल्सो लाइक 4z plus 1 is equals to 8. ओके, सॉल्व. इन सॉल्व नॉर्मल आई एम राइटिंग given what it is given like 4z plus 1 is equals to 8. Yes student, अब आप बोलिए मेरे को what is LHS? Here 4z plus 1 and what is RHS? RHS we have with us like 8. So hope you understood. So like that we have few more sums. I am just doing one more sum in front of you. Question number 4. What is we have question number 4 with us? 5p plus 3 is equals to 2p plus 9. So what we are writing? First of all given what it is given, 5p plus 3 is equals to 2p plus 9. So LHS 5p plus 3 here, hope you understood. Then RHS we have with us like 2p plus 9. So these four sums you need to copy down, and for like equation I am writing one statement. यहाँ पे मैं एक statement लिख देता हूँ इक्वेशन को लेकर. रेड मार्कर से लिखेंगे जी, यूज़ नहीं कर रहे हैं. Look at here EQUATION equation. Look at here a mathematical statement STATEMENT having two equal sides EQUAL equal SIDES sides named as LHS, RHS. If you want, you can write full form LEFT, left hand side. Okay, RIGHT, right hand side. Isn't it? So this is the simple definition for equation. A mathematical statement having two equal sides named as LHS and RHS. So what we have to do now? First, you need to copy like chapter number 3 simple equation. After that write the definition of equation. After that you have to put exercise number 1 and do this problem from 1 to 4. We have few more problem with us in exercise, like first one we have 5th 6th 7th you need to do by yourself. Like 5th month I am doing here itself so that it will be easy to you. I want to do more and more problem here, but few problems you need to do by your own also. मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कराऊँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपको अपने ओन से भी करना पड़ेगा. अपनी तरफ से ट्राई करना है, अपना एफर्ट्स और हार्डवर्क रखना है उसमें, और अपना जो सूझबूझ है, क्योंकि मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट विच टेक्स दी थिंकिंग, सोच के करना पड़ेगा.
तो यहाँ पे LHS क्या है ऑल द स्टूडेंट, हमारे पास व्यूअर्स 14 है। RHS क्या रह गया हमारे पास, लाइक 27 माइनस वाई। तो अभी आप ये पूरा कंप्लीट कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। ओके, होप यू हैव कॉपीड द प्रॉब्लम विच वॉज रिटन ऑन द बोर्ड। नाउ द टाइम टू डू वन मोर टाइप ऑफ प्रॉब्लम विथ अस, बिलोंग्स टू एक्सरसाइज नंबर 1 itself, third chapter, simple equation. So the question we have with us is solve the following equation by trial and error method. That means you have to trial. If you get the error, you need to again trial, again trial, again trial. So how we can solve? First, what we are doing here means we are writing given. What it is given, 2 plus y is equals to 7. So first we are putting instead of y 1. So will we get like 3 is equals to 7? It is not a correct thing. So we need to just instead of 1 we have to take like 2. Okay, 2 plus 2 4, again we will not get. So we have what we have to get, like I am putting here 2 plus 2 is equals to 7, 2 plus 3 is equals to 7, 2 plus 4 is equals to 7, 2 plus 5 is equals to 7. So among this we have, this is like we trial got error, we trial got error, we tried got error. So like this we tried got error, here we tried and we got success, not error. Okay, how success? 2 plus 5 is nothing but 7, 7 equal to 7. So this is a trial error method. One more problem I want to do, we can directly put like 2 plus 5 is equals to 7, but in question it is given like trial and error. For that we need to follow this procedure. So a minus 2 is equals to 6 we have with us. So what I am doing, like solve. In solve I am writing given. What it is given, all the student and viewers, a minus 2 is equals to 6. I am keeping 1 minus 2 is equals to 6, it is minus 1. So on I have to try. So finally what I will get, like 8 minus 2 is equals to 6. This is an correct answer. One more problem we have to do. Okay, third one. थोड़ा तेज तेज समझा रहा हूँ क्या बच्चों? देखिए, हमको एक ही जगह 1 2 3 4 5 रखते रहना है। कब तक रखना? जो हमारा LHS और RHS बराबर होना है। तो जब मैं 8 रखूंगा, 8 माइनस 2 कितने होते? मेरे को 6 होते, 6 इज इक्वल्स टू 6 होता। तो वैसे ही मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 रखते ही रहना है जब तक कि मैं सक्सेस नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लस 5 रखने पर 7 इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे हम आगे नहीं लिखेंगे 7 इक्वल टू 7, बस इसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। वैसे ही हमारे पास और एक सम है 5m इज इक्वल्स टू 15। सेम हम क्या करेंगे, इसको ट्रायल करेंगे। ओके, व्हाट वी आर ट्राइंग, फर्स्ट आई एम राइटिंग गिवन, व्हाट इट इज गिवन, 5m इज इक्वल्स टू 15। सो आई एम जस्ट ट्राइंग 5 into 1 is equals to 15, we will not get. 5 into 2 is equals to 15, not get. 5 into 3 is equals to 15, this will be the correct. Why correct? 5 ones are 5, 5 is equals to 15, not possible. 5 2s are 10, 10 is equals to 15, not possible. 5 3s are 15, 15 is equals to 15, possible. So we have done. You need to do one sum by your own. आप अपनी तरफ से एक सम करिए। फोर्थ वाला है 2n is equals to 14. सो अभी इससे हमारा पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 1 लाइक सिंपल इक्वेशन की। वी विल जस्ट कंटिन्यू आवर दिस चैप्टर सिंपल इक्वेशन इन आवर नेक्स्ट सेशंस। सो टिल देन just remember the equation, what is equation. After that you have to work on your exercise number 1. Make sure keep your Telangana 7th class reader with you while you are listening to the lecture. First thing. Second thing, you have to note down the thing which I am explaining you and maintain date also. This is a recorded video, I will not going to put date, but while you are writing you need to write the date also. Okay, so I am Syed Rashid, you know me. I am taking care here like mathematics, physics, chemistry for higher classes. So maintain notes, have a great time. You are watching our YouTube channel name as Ahle Baith High School and Junior College. Thank you.